So for now, here you can see we have this ISP router and R2 and R3, they are connected with ISP router. Behind R2, we are going to use a network. For example, it is 10.110/24. Okay, this is your internal network, which is connected behind R2, or you can give it like this 10.120/20. Okay, R2 के behind क्या connected है 10.120/24. And behind R3 we are connecting 10.130/24. This is the internal network connected behind R3. Now, when these internal networks will communicate with each other, what I want, they should be able to communicate through VPN tunnel, right? So we want to establish the VPN tunnel between these two routers, R2 and R3, and they are communicating over the internet. Okay, so let's start them. तीनों start होकर बंद हो गए. Let's edit this device and select this image. Edit and select this image. Here also edit and select this image. Now you can wipe all logs and start. So here between R2 and ISP, we are using 101.1.0/24. And between R3 and ISP, we are using 102.110/24. Let's take the access. Devices are booting right now. So when Cisco router will start, you will see this dialog box. You will see this dialog prompt, you can say, right? तो यहाँ पे आपको no कर देना है, right? You know about this. So here we have these router 2 and router 3, host name R2. And this is router 3. And this is ISP. Okay, internet service provider. So let's configure R2. So first of all, we need to maintain the reachability between these two routers, right? So on R2, we have interface E0/0. It is connected with ISP. So here I am configuring 101.1.1 and interface loopback 1 just to show this network 10.1.2.1. And we will configure a default route towards ISP. On ISP router, I will give 101.1.10. Then you can go to R3. Here you will configure interface E0/0, 102.1.1, and interface loopback 1, 10.1.3.1. After that, you will configure default route towards ISP. Then on ISP router, E0/0 interface is connected with R2. So 101.1.10. And E0/1 interface is connected with R3, 102.1.10. Okay, now you can verify the connectivity between R2 and R3. R2 is able to ping 102.1.1. It is R3 WAN IP address. From R3, you can ping 101.1.1. It is R2 WAN IP address, right? So they are able to reach each other via internet, via ISP. Okay. Now, if I try to ping 10.1.2.1, right? It is the loopback interface connected behind R3. I am pinging it from R2. It is reachable because हमने क्या दे रखा है डिफॉल्ट राउट. ओके, बट अगर आपके ये इंटरनल नेटवर्क रीचेबल नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, बिकॉज दे विल गो थ्रू VPN टनल. समझ में आ रहा है? अभी के लिए मैंने डिफॉल्ट राउट दे रखा है, राइट? दैट्स व्हाई दे आर रीचेबल टू ईच अदर. Now VPN devices are able to communicate with each other, so we can establish VPN tunnel. Okay, so first of all you need to configure phase 1, right? तो यहाँ पे कमांड क्या चलाओगे आप? क्रिप्टो
आइजैकैम। देखो राउटर पे कमांड चलती है क्रिप्टो आइजैकैम, ओके, IKEv1 नहीं चलती है, तो क्रिप्टो आइजैकैम एंड देन पॉलिसी। Here you need to define a priority for protection suite. Why it is called a protection suite? Because it contains all the encryption algorithm, hashing algorithm, right? Diffie-Hellman algorithm, authentication method. That's why it is called a protection suite. Now you need to define a priority number. Okay, like 10. अब अगर आपके पास multiple ISACM policies configured है, then all these ISACM policies will be evaluated in the sequence. Okay, लोअर नंबर विल गेट हायर प्रायोरिटी। मतलब अगर आपके पास 5 पॉलिसीज कॉन्फ़िगर्ड है, 10, 20, 30, 40, 50, तो अगर कोई VPN नेगोशिएशन होगा, सबसे पहले 10 वाली वैलिड होगी, फिर 20 वाली होगी, फिर 30 वाली होगी। अब मान के चलो 30 वाली मैच कर गई, तो वहीं पे नेगोशिएशन कंप्लीट, मतलब एक पॉलिसी मैच कर जाएगी, राइट? देन रिमेनिंग पॉलिसीज विल नॉट बी मैच्ड, ओके, विल नॉट बी इवेल्युएटेड, यू कैन से। So here you need to define these 5 parameters. Actually 5 parameters होते हैं, उनमें से 4 mandatory है। लाइफ टाइम अगर आप डिफाइन करना चाहो तो करो, अदरवाइज it is not mandatory. By default the lifetime of phase 1 or lifetime of ISACamp SA IKEv1 SA is 1 day. Okay, by default 8486400 seconds, okay, 1 day होती है। इफ यू वांट टू चेंज इट यू कैन चेंज इट, हम देखेंगे अभी। तो अभी के लिए देखो यहाँ पे ये पैरामीटर्स डिफाइन करने हैं। सबसे पहले डिफाइन कर दो आप इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, क्वेश्चन मार्क लगाओ। देखो ये तीनों दिखा रहा है, CDES, AES एंड DES। AES एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, राइट? DES डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ओके, एंड दिस इज ट्रिपल DES, 3 कीज ट्रिपल DES, ओके। तो यहाँ पे हम लोग AES ले लेते हैं अभी। AES, in AES we have different key size, 128, 192, 256. So for now I am taking 256, okay. So encryption AES 256. Then hash authentication means hash algorithm, okay। तो यहाँ पे आप SHA ले सकते हो, MD5, SHA-384, SHA-512, ये सब मैंने बताया था आपको, right? These are different types of hashing algorithms, okay। So for now I am taking SHA-256. After that you need to define DH, you need to define DH group. Okay, this is Diffie-Hellman group number. Now, this Diffie-Hellman algorithm, I told you it is an asymmetric type of encryption algorithm, right? And it will generate a key pair in which it will have a public key and a private key. Now, when you are using DH in this VPN negotiation, here router will generate a public key and a private key. That public key is called keying material, which will be sent to the VPN peer, to the destination VPN peer. Same R3 will do. R3 will use Diffie-Hellman algorithm and it will generate a public key and private key. It will send its public key as a keying material to R1. अब देखो दोनों राउटर्स के पास अपनी अपनी प्राइवेट की पहले से है, राइट? और दोनों राउटर्स ने एक दूसरे की पब्लिक की एक्सचेंज कर ली। नाउ दे विल जनरेट ए शेयर्ड सीक्रेट की यूजिंग ऑल दिस मटेरियल। नॉन्स वैल्यू भी आती है, राइट? मैंने आपको बताया था नॉन्स वैल्यू। तो कीइंग मटेरियल, नॉन्स वैल्यू प्लस जो Diffie-Hellman प्राइवेट की यहाँ पहले से है, उनको यूज करके एक क्या होती है, शेयर्ड सीक्रेट की जनरेट होती है, ओके। That shared secret key will be used to, you can say, encrypt further negotiation, okay, further IPsec packets, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप नंबर डिफाइन करना होता है। ग्रुप नंबर विल डिफाइन द की साइज फॉर Diffie-Hellman एल्गोरिथम, ओके। तो जो भी आप ग्रुप नंबर यूज करना चाहते हो वो कर सकते हो, मोस्टली ग्रुप 2, ग्रुप 5, ओके, दीज ग्रुप्स आर यूज्ड, ओके। तो अभी के लिए ग्रुप 2 यूज कर लो। After that, authentication. Now you can see authentication. We have pre-shared key authentication, then RSA encryption, and then RSA signature. So this RSA encryption is not that much secure, okay, and it is not supported on the, you can say, modern devices. जो अभी नई devices आती है, जैसे firewalls होते हैं, next generation firewalls होते हैं, उन पे ये RSA encryption support भी नहीं करता, because it is not secure, okay। RSA, अब देखो प्रीसेट में क्या होता है, प्रीसेट की में, इसमें मैंने आपको बताया कि आप दोनों राउटर्स पे एक एक प्रीसेट की कॉन्फ़िगर कर दोगे, दैट प्रीसेट की मस्ट मैच, राइट? After that, RSA encryption. In RSA encryption, you are going to use RSA algorithm to generate public key and private key. Based on public key, your VPN peers will be authenticated. देखो जो RSA algorithm है, वो encryption और authentication दोनों परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। Sometimes it can be used to perform secure key exchange by encrypting the security keying material, right? And sometimes it can be used in authentication also. जैसे यहाँ पे देखो RSA encryption की हेल्प से आप authentication भी यूज कर सकते हो। अब जो RSA signature है ये डिजिटल सर्टिफिकेट्स होता है, उसमें भी RSA की का यूज होता है, ठीक है। उसमें भी क्या होता है, RSA की का यूज होता है, उसमें हम लोग PKI यूज करते हैं, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज द पार्ट ऑफ RSA, ओके। तो अभी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रीशेयर। तो यहाँ प्रीशेयर लेंगे।
Then you can define lifetime. It is optional. Lifetime is 1 day by default. If you want to make it half day, okay, means 12 hours, then you can configure it according to you. Otherwise, mostly it is not changed. And if it is changed, then lower value will be used. मान के चलो कि आपने R2 पे 3600 कर दिया, 1 hour कर दिया इसका टाइम आउट, राइट? और R3 पे 1 day है जो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट वहां पे कॉन्फ़िगर्ड आया था, ठीक है? अब जब वीपीएन टनल नेगोशिएट होगी तो दोनों राउटर क्या करेंगे, ये 3600 वाला लाइफ टाइम यूज करना स्टार्ट कर देंगे, ओके? लोअर लाइफ टाइम विल बी नेगोशिएटेड बिटवीन द राउटर, बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू मैच। तो ये देखो फेज 1 की पॉलिसी बना दी हमने, राइट? अब देखो यहाँ लाइफ टाइम दिखाता भी नहीं है, बिकॉज जो हमने डिफॉल्ट यूज की है वही कॉन्फ़िगर की है, राइट? So here you can see encryption is AES 256 hash SHA-256 authentication pre-share and group number 2. So this is your ISACAM policy or phase 1 policy. Clear? Now we are using authentication pre-shared. So we need to configure a pre-shared key, right? So crypto ISACAM key. फिर इसके बाद आप क्या डिफाइन करोगे? प्री-शेयर्ड की लाइक सिस्को 123, okay? And then address. Here you will define for which VPN peer you want to use this pre-shared key. अब देखो ऐसा होता है, अभी तो हमने 2 राउटर कनेक्ट किए, बट रियल टाइम में हो सकता है 3 साइट्स हो, 4 साइट्स हो, और उनके बीच में आप साइड टू साइड वीपीएन आपस में कॉन्फ़िगर कर रहे हो फुल मैच कनेक्टिविटी के लिए, राइट? तो अगर आप डिफरेंट वीपीएन पेयर के साथ डिफरेंट प्रीशेड की यूज करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप उस वीपीएन पेयर का एड्रेस डिफाइन करोगे। जैसे अभी R3 के लिए मुझे यूज करना है, तो मैंने 102.111 डाल दिया। नाउ इफ यू वांट टू यूज दिस सिंगल प्रीशेड की फॉर ऑल द वीपीएन पेयर्स, देन यू कैन गिव दिस वाइल्ड कार्ड एंट्री 0.0.0 फॉर एनी आईपी एड्रेस। कोई भी वीपीएन पेयर हो, किसी के भी साथ वीपीएन नेगोशिएट हो रहा हो साइड टू साइड वीपीएन, तो आप ये की यूज कर सकते हो, राइट? But for now, I am giving the address of my VPN peer. Okay? Clear? अगर मल्टीपल VPN peer है और आप एक ही प्रीसेड की यूज करना चाहते हो, तो फिर ठीक है, आप यहाँ 000 लिख सकते हो, right? Otherwise, if you just want to define a specific preset key for every VPN peer, then you need to call its address like this. तो फेज 1 कॉन्फ़िगरेशन इज डन। फेज 1 में आपको यही कॉन्फ़िगर करना होता है। पहले आपने पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर दी, फिर अपना ऑथेंटिकेशन जो भी है उसको भी कॉन्फ़िगर कर दिया, लाइक हियर प्रीसेट की इज कॉन्फ़िगर्ड, ओके? After this, you need to configure phase 2. So for that, you will configure crypto IPsec transform set. देखो अब ये phase 2 में IPsec आ गया तुरंत। पहले क्या था? ISACAMP, यहाँ भी था ISACAMP, राइट? अब क्या आ गया? IPsec। तो ये phase 2 की configuration है, ओके? Crypto IPsec transform set. Now you need to give a name, a tag to this transform set. Like you can give tset1, okay? tset1 for R2. ऐसे करके आप कोई भी एक लॉजिकल नेम दे सकते हो, ओके? Then you need to define your encapsulation protocol, whether you want to use AH or you want to use ESP. अब देखो ESP के साथ आप इंक्रिप्शन एल्गोरिथम का कॉम्बिनेशन देखोगे, यहाँ पे दिख रहा है 3DES, AES, DES, राइट? एंड ESP के साथ आप हैशिंग एल्गोरिथम का भी कॉम्बिनेशन देखोगे, राइट? हैशिंग एल्गोरिथम SHA-256, राइट? MD5, ये सारे है ना यहाँ पे। लेकिन AH में आपको सिर्फ हैशिंग के कॉम्बिनेशन मिलेंगे, मींस हैशिंग एल्गोरिथम यूज होती है। यहाँ पे कोई इंक्रिप्शन का कोई एल्गोरिथम डिफाइंड नहीं है, राइट? बिकॉज AH डज नॉट सपोर्ट इंक्रिप्शन, दैट्स व्हाई इट इज नॉट वाइडली यूज्ड। सो फॉर नाउ वी विल यूज ESP AES. नाउ यू कैन डिफाइन द की साइज फॉर फेज 2 पॉलिसी, ओके? यहाँ भी मैं 256 यूज कर लूंगा, ठीक है? देखो फेज 1 की पॉलिसी अलग है, फेज 2 की पॉलिसी अलग है, ठीक है? सो वट एवर पैरामीटर्स यू आर यूजिंग इन फेज 1, they are not related to phase 2. आप phase 2 में जो पैरामीटर्स डिफाइन कर रहे हो उनको phase 1 से कोई मतलब नहीं, ओके? They will be separately negotiated. Then ESP, because हैशिंग एल्गोरिथम भी तो डिफाइन करनी है, ये तो इंक्रिप्शन हो गया, ठीक है? चलो हैशिंग के लिए SHA-256 HMAC। अब देखो ये लास्ट में HMAC लगा है, इसका मतलब क्या होता है बताओ मिस्टर शिबू, सौरभ जी? ये कीड हैशिंग के लिए यूज होता है सर, ये की प्लस मैसेज दोनों को इकट्ठे हैश करता है। ठीक है। अब देखो जो नॉर्मल हैशिंग होती है, मान के चलो जिसमें आप HMAC यूज नहीं कर रहे हो, इसमें क्या होता है कि जस्ट डेटा की डाइजेस्ट वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है, राइट? एंड इफ हाउएवर द अटैकर हैज गॉट द आइडिया ऑफ हैशिंग एल्गोरिथम, देन ही कैन आल्सो जनरेट द सेम डाइजेस्ट वैल्यू फॉर द डेटा, राइट? एंड ही कैन change or modify the data inside the packet, okay? Now if you want to provide more secure hashing function, then you can use HMAC. In HMAC, what will happen? It is called hashed message authentication code. Okay, hashed message authentication code, HMAC.
Now HMAC will create the digest value, but it will use data plus a key. It will use a key. I will tell you in the negotiation. It will use a key so that it can create the keyed digest value or keyed hash value. Okay, इसको क्या बोलते हैं? Keyed बोलते हैं. Keyed hash value or keyed digest value. So it will be more secure. Now, however, if attacker has got the idea about hashing algorithm, but he does not know about the key, right? So he cannot generate the same digest value. Okay, are you getting this? तो ये HMAC प्रोटोकॉल कह सकते हो आप, जो हैशिंग एल्गोरिथम के साथ यूज होती है, हैश्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। अभी मैं आपको इसका मोड भी बताऊंगा, ठीक है? जो आईपीसेक के मोड होते हैं, टनल मोड एंड ट्रांसपोर्ट मोड। ओके, बाय डिफॉल्ट इन साइड टू साइड वीपीएन टनल मोड इज यूज्ड। ओके, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। So this transform set is defined. Okay, transform set is defined. Now you need to define interesting traffic ACL. फेज 2 में क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म सेट बताते हैं, इसमें आईपीसेक पॉलिसी बता दी, क्या इंक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज होगी, क्या एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल यूज होगी, राइट? क्या हैशिंग एल्गोरिथम यूज होगी। अब आपको क्या बताना है कि कौन से ट्रैफिक आप वीपीएन टनल के थ्रू सेंड करना चाहते हो, which traffic you want to send through the VPN tunnel. So for that you will define interesting traffic ACL, IP access list extended. Here we want to call source subnet and destination subnet, right? So we need to create extended ACL. Extended, then you can give a name like VPN ACL. Okay. Here you need to call permit IP. Okay. Permit IP. Source is 10120, then it's wildcard mask. Destination 10130, then it's wildcard mask. Access list is defined. If you have other subnets, you can create other entries here. Okay. अगर आपके पास 2 सबनेट और हैं, तो आप उन दोनों के लिए एक एंट्री क्रिएट कर दो, ठीक है? Now you need to create a crypto map so that you can apply. See, the VPN is configured, but the configuration is not applied, so it is not effective because IKv1 is not enabled by default. Okay, so what we need to do, we need to apply all this configuration on the WAN interface, which is facing the internet. Okay, which is facing the public transport. Okay, so let's create a crypto map. Now you need to give a name to this crypto map. Let's say my map. Okay, and then you need to give a sequence number. Now, why the sequence number is required? Let's say you are negotiating the VPN tunnel with the multiple VPN peer from R2. Okay, R2 connected है यहाँ पे, R3 connected है, यहाँ कंसीडर कर लो आप R4 connected है, फिर एक R5 connected है, एक R6 connected है, ठीक है? और उन सबके साथ R2 को VPN tunnel negotiate करना है. Then what will happen? You need to create multiple crypto map on the router, right? आपको राउटर पे multiple crypto map बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जितने भी VPN peer होंगे, उनका VPN peer IP एड्रेस अलग होगा, इंटरेस्टिंग ट्रैफिक के लिए अलग ACL यूज होगी, राइट? अलग एंट्रीज यूज होंगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंट क्रिप्टो मैप क्रिएट करने पड़ेंगे, राइट? एंड डिफरेंट IPsec policies can also be used for different VPN peers. So you need to create different crypto map, but on a router physical interface, you can apply only one crypto map. अब जैसे आपने एक क्रिप्टो मैप बनाया, माई मैप, ठीक है? इसको अप्लाई कर दिया E0/0 पे। अब इससे तो एक ही टनल नेगोशिएट हो सकती है वैसे तो, है कि नहीं? लेकिन अगर आपको मल्टीपल टनल्स नेगोशिएट करनी है, तो आपको मल्टीपल क्रिप्टो मैप्स क्रिएट करने पड़ेंगे, और उनका अगर आपने नाम चेंज कर दिया, तो आप उनको इंटरफेस पे अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे माई मैप पहले से अप्लाइड है, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं? नेम चेंज नहीं करते, फिर ये सीक्वेंस नंबर चेंज करते हैं, इसीलिए सीक्वेंस नंबर यूज होता है। इफ यू वांट टू क्रिएट मल्टीपल क्रिप्टो मैप विद द सेम नेम, देन यू विल यूज डिफरेंट सीक्वेंस नंबर इन ईच क्रिप्टो मैप। ओके, clear? So crypto map, my map, then the sequence number, and you can create different types of crypto map. Okay, for now we will use IPsec ISACAMP. देखो यहाँ पे वैसे आप ये IPsec ISACAMP यूज कर सकते हो, और IPsec manual for site to site VPN, and this GDOI is used for get VPN. Okay, it is different. It is not for site to site VPN. So when you are configuring site to site VPN, either you can use IPsec ISACAMP or you can use IPsec manual. Now when you are using IPsec ISACAMP, it means IPsec with ISACAMP means phase 1 and phase 2 both will be negotiated. Okay, अगर आप IPsec ISACAMP क्रिएट कर रहे हो, IPsec ISACAMP टाइप का क्रिप्टो मैप क्रिएट कर रहे हो, तो phase 1 and phase 2 दोनों नेगोशिएट होंगे, both will be negotiated. Okay, and if you are using IPsec manual, then phase 1 will not be negotiated. You have to perform manual keying. आप फिर की जनरेट करोगे दोनों राउटर्स पे मैनुअली phase 1 के लिए, और उनको एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ठीक है? तो वो सब नहीं करते हम लोग, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? IPsec ISACAMP, ठीक है? अब ISACAMP क्या करता है? phase 1 टनल एस्टेब्लिश करता है, एक मैनेजमेंट टनल एस्टेब्लिश करता है, राइट? अगर आप उसको मैनुअली करोगे, तो आप सेकंड ऑप्शन यूज कर सकते हो, IPsec मैनुअल। अदरवाइज अगर आप phase 1 phase 2 दोनों यूज कर रहे हो, तो फिर आप IPsec ISACAMP यूज करोगे, ठीक है? लाइक दिस।
So this new crypto map will remain disabled until a peer and a valid access list have been called. तो एक peer define कर दो, यहाँ set peer command होती है, peer define कर दो, peer हो गया 102.1.1. Then you need to call access list, right? Match address, VPN ACL. ACL भी कॉल होगी, ये कमांड होती है मैच एड्रेस. ACL यहाँ पे मैच करनी थी ना हमें, तो मैच एड्रेस, ये एड्रेसेस मैच करने हैं जो ACL में डिफाइंड है. और अब आपको बताना पड़ेगा कि आप किस एल्गोरिथम्स की हेल्प से यहाँ पे ट्रैफिक को इनक्रिप्ट करना चाहते हो इस क्रिप्टो मैप के थ्रू, राइट? तो यहाँ पे हमने वो किसमें बताया, ट्रांसफॉर्म सेट. तो हमें ट्रांसफॉर्म सेट कॉल करना पड़ेगा, सेट ट्रांसफॉर्म सेट. एंड द नेम ऑफ ट्रांसफॉर्म सेट tset1 फॉर R2, यही तो था, tset1 R2. Now this transform set will tell the router how to encrypt or decrypt the packets. क्योंकि इसमें आपकी encryption and hashing algorithms called है, right? जो data plane को secure करेंगे. तो transform set is used to tell the router for, or you can say which encryption and hashing algorithms will be used to decrypt the traffic, or which IPsec assay will be used to decrypt the traffic or encrypt the traffic. ये transform set ही बताएगा, right? ठीक है. Crypto and access list. So this is the configuration. ये फेज 1 हो गया आपका यहाँ तक, ठीक है. फिर ये फेज 2 में ट्रांसफॉर्म सेट डिफाइन कर दिया. देखो मोड टनल कॉल है बाय डिफॉल्ट टनल मोड होता है, अभी आगे डिस्कस करेंगे. दिस इज योर ACL फॉर इंटरेस्टिंग ट्रैफिक. देन वी क्रिएटेड दिस क्रिप्टो मैप. अब देखो अगर आपके पास R2 के साथ एक और VPN कनेक्टेड है R4, राइट, और उसके साथ भी आपको VPN टनल नेगोशिएट करनी है, तो यहाँ क्रिप्टो मैप माई मैप सीक्वेंस नंबर 11 कर दो, 20 कर दो, कुछ भी कर दो, और है ना. तो एक और आप क्रिप्टो मैप बना लोगे, वो आप दूसरे VPN पेयर के साथ यूज कर सकते हो, ठीक है. अब देखो ये क्रिप्टो मैप क्रिएट हो गया. नाउ वी नीड टू अप्लाई द क्रिप्टो मैप ऑन WAN इंटरफेस व्हिच इज कनेक्टेड विद ISP और इंटरनेट. तो इंटरफेस E0/0 पे चले जाओ और यहाँ पे क्रिप्टो मैप अप्लाई कर दो, क्रिप्टो मैप माई मैप. तो अब इस माई मैप में जितने भी सीक्वेंस क्रिप्टो मैप आप बनाओगे वो सब अप्लाई हो जाएंगे E0/0 पे, है ना. अगर कोई दूसरा VPN पेयर होता अपने पास R4 या R5, तो उसके लिए आप एक सेपरेट क्रिप्टो मैप बनाते, राइट, विद डिफरेंट सीक्वेंस नंबर, बट नेम वुड बी माई मैप, नेम वही रहेगा माई मैप, ठीक है. तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, आइजा कैंप इज ऑन. बाय डिफॉल्ट आइजा कैंप इज डिसेबल्ड. नाउ योर VPN राउटर इज रेडी. ओके, you can go to R3. You need to configure all this configuration on R3 also. That's why it is called that side-to-side VPN is used in small networks, okay, or it is used to create the secure tunnel between two remote sites, okay. Small networks में यूज करते हैं because you have to do all this configuration on all the VPN peers. अब अगर आपके पास 10 राउटर कनेक्टेड है, 50 राउटर कनेक्टेड है, 100 राउटर्स कनेक्टेड है, या 500 राउटर्स हैं जिनके बीच में आपको VPN टनल एस्टेब्लिश करनी है, ठीक है, तो आप साइड टू साइड VPN यूज नहीं करोगे फिर, ओके. यू विल यूज ए डिफरेंट VPN सॉल्यूशन व्हिच इज DMVPN, मैंने आपको बताया था पहले, ओके. तो इट इज यूज्ड इन स्मॉल नेटवर्क्स ऑलवेज. तो लेट्स कॉन्फ़िगर R3 फॉर ऑल दिस फेज 1 एंड फेज 2. वैसे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं अभी करूंगा नहीं, आप भी मत करें, थोड़ा कमांड याद हो जाएंगी ऐसे, ठीक है. ऑथेंटिकेशन, appreciate, encryption, AES 256, ये मैच करना चाहिए, राइट. हैश 256, ग्रुप नंबर 2. लाइफ टाइम बाय डिफॉल्ट 1 डे होता है. क्रिप्टो आइटम की इज cisco 123. देन एड्रेस इट इज फॉर R2 102.1.1. देन क्रिप्टो IPsec transform set, here you can give tset1 for R3 हो जाएगा ये, ठीक. कुछ भी नेम दे सकते हो आप, एक लॉजिकल नेम. यहाँ R2 दे दिया था तो यहाँ R3 दो. ESP AES 256, ESP SHA-256 H1. Then IP access list extended, here you can give the name VPN ACL, okay. Then you can define permit IP. Now the ACL should be mirror image of R2. तो R2 पे 10.1.2.0 सोर्स था एंड 10.1.3.0 डेस्टिनेशन. तो यहाँ पे 10.1.3.0 सोर्स हो जाएगा एंड 10.1.2.0 डेस्टिनेशन, राइट, जस्ट अपोजिट. बिकॉज जब R3 से ट्रैफिक जनरेट होगा तो ये 10.1.3.0 सोर्स में आ जाएगा, तो ये ट्रैफिक मैच होना चाहिए, एंड 10.1.2.0 डेस्टिनेशन में, तो ये भी मैच होगा, राइट. देन क्रिएट क्रिप्टो मैप, you can give my map. Then sequence number 10, IPsec. Then set peer. Here you will give 101.1.1. This is peer IP address. Match address. This is your VPN ACL.
and set transform set. It is tset 1 R3, right? And you will apply all this VPN configuration on the WAN interface, which is connected with internet. So interface E0 by 0 is here. Crypto map, my map. Okay. Here also VPN is configured. Any doubt in the configuration? बताओ आप लोग कोई doubt configuration? Now we need to verify, right? So what I am going to do, I am going to enable a Wireshark packet capture on R3 WAN interface E0 by 0. This is R3 WAN interface, right? E0 by 0. So Wireshark is started. Okay. Now let's send the traffic from loopback interface of R2 to loopback interface of R3. ठीक है, R2 के loopback से R3 के loopback तक आपको पैकेट भेजना है, राइट? थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको. Now it is visible, right? Now let's go to R2, and here you will ping 10.1.2.1 source loopback 1, right? Source क्या हो जाएगा? Loopback 1. Data plane verify करना है हमें, okay? It is reachable, but VPN is not negotiated. ऐसा नहीं. देखो यहाँ कोई पैकेट्स नहीं आए ना यार, ICMP के भी पैकेट्स नहीं आए. Wait, I am pinging wrong IP address. Do show IP interface. Yes, ये 10.1.2.1 तो यहीं पे है. Destination है 10.1.3.1. Source loopback 1. Okay, अब ठीक है. Now you can see these are either CAM packets, then ESP packets, and it is able to ping. Okay. Clear. You can see these are IKEV1 or ISACAM packets. Here you can see this is main mode. Main mode is running. I told you that in site-to-site VPN, main mode is used, right? So in phase 1, 6 packets are being exchanged, and this is quick mode for phase 2. Here you can see 3 packets are being exchanged, right? Okay. Now you can open first packet. This is first packet. You can see here it is showing ISACAM pattern, Internet Security Association and Key Management Protocol. It is encapsulated in UDP 500. Source and destination, both ports are 500. Then IPv4 header, जो अपना source IP, tunnel destination IP है, right? Then Ethernet header for MAC addresses. ठीक है, तो अब आप इसको open करो ISACAM pattern को. अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले initiator SPI, responder SPI. This SPI is called Security Parameter Index. Okay. ठीक है, अब देखो ये सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स क्या होता है. अगर आप इसकी आरएफसी खोलोगे, आरएफसी रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, जो व्हाइट पेपर होता है किसी भी प्रोटोकॉल के लिए, तो वहां पे आपको मिलेगा इनिशिएटर कुकी एंड रेस्पॉन्डर कुकी. ओके, एंड इट इज द हैश वैल्यू ऑफ सोर्स आईपी एंड सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन आईपी एंड डेस्टिनेशन पोर्ट. ओके, so that every ISACAMP session, every ISACAMP negotiation can be differentiated, you can say can be differentiated uniquely. Okay, तो ये इनिशिएटर एसपीआई. अब देखो ऐसा होता है ना कि अभी अभी तो 2 ही राउटर है, मान के चलो और भी तो राउटर होंगे, उनके साथ भी तो नेगोशिएशन करेगा R2, है ना? तो उनके लिए डिफरेंट इनिशिएटर आईपी होगा, क्योंकि उनका सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी डिफरेंट होगा, राइट? तो ये इनिशिएटर एसपीआई और रेस्पॉन्डर एसपीआई किस लिए यूज होती है? एक ISACAMP सेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड इट इज द हैश वैल्यू ऑफ सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट. ठीक है. Then version 1, we are using IKEV1, right? ये version 1 है. Exchange type identity protection, ये flag छोड़ दो. Message ID अभी 0 है, ठीक है. अब नीचे आ जाओ, ये security association पे, ठीक है. In security association you will find proposal, this payload proposal. In payload proposal you will find this transform, and here you will find these ISACAMP policies: AES 256, SHA 256, group number 2. This is 1024 bit, means group number 2. Authentication pre-shared, lifetime 1 day, right? This is your ISACAMP policy which is being sent. Okay. अरे यार ये क्या हो गया, पूरा कैप्चर ही बंद हो गया. वेट,
I just closed that. Give me 1 minute. I have some captures saved. This is for site-to-site VPN. So here we have seen this first packet. ठीक है, तो इसमें आपकी सारी encryption algorithms आ रही थी, right? Encryption algorithm, hashing algorithm जो भी आपने phase 1 में configure किए हैं. Okay, clear? ये जो After सर this, एक्स्ट्रा पेलोड्स है उसका भी कोई इम्पोर्टेंस है क्या नीचे जो था इसको इसमें नीचे जो कुछ और भी पेलोड्स है लाइक वेंडर वगैरह का हाँ, कुछ वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. नेटी में पढ़ेंगे उनको. ये नेटी नेगोशिएशन में यूज होता है. ये देखो, ये लिखा है नेगोशिएशन ऑफ नेट ट्रैवर्सल इन IKE. Okay, so we will discuss about it later. ओके Net. Then we have the second packet. In the second packet, the responder VPN peer will reply with its matching policy. देखो ये matching policy इसने send कर दी. Okay, with matching policy. Now policies are matching. In the third packet, the initiator will send. अब initiator देखो यहाँ पे कौन था अपनी टोपोलॉजी में R2, right? In third packet, R2 is sending. देखो 101.1.1 से आ रहा है 102.111 के लिए. ठीक है, तो ये R2 क्या कर रहा है, अपना डिफी एलिमेंट कीइंग मटेरियल एंड नॉन्स वैल्यू सेंड करेगा. ओके, इन थर्ड पैकेट you can see this is key exchange. In this key exchange you will find diffie element keying material. अब देखो यहाँ इनिशिएटर रेस्पॉन्डर दोनों की SPI आ गई ना. इनिशिएटर SPI इनिशिएटर लगाता है और रेस्पॉन्डर SPI रेस्पॉन्डर लगाता है. जब वो रिप्लाई करेगा दूसरा पैकेट भेजेगा उसी में रेस्पॉन्डर SPI लगा के भेज देता है. ठीक है, अब ये दोनों कनेक्शन को यूनिकली डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होती है. अब यहाँ पे देखो ये डिफी एलिमेंट कीइंग मटेरियल है. दिस इज योर की एक्सचेंज डेटा एंड हियर वी हैव नॉन्स वैल्यू. दिस इज रैंडमली जनरेटेड data by the router. Okay, so that they can perform secure key exchange. अब ये दोनों इंफॉर्मेशन R2 से R3 पे चली जाएगी. फिर उसके बाद R3 क्या करेगा, शेयर्ड सीक्रेट की जनरेट कर लेगा. ठीक है, इसी तरह से देखो R3 ने फोर्थ पैकेट भेजा है. इन दिस फोर्थ पैकेट R3 इज सेंडिंग इट्स डिफी एलिमेंट कीइंग मटेरियल एंड नॉन्स वैल्यू. ओके, ठीक है, R3 क्या कर रहा है, आपको डिफी एलिमेंट कीइंग मटेरियल सेंड कर रहा है और नॉन्स वैल्यू सेंड कर रहा है. नाउ R2 and R3 both have exchanged their diffie element keying material and nonce value, and now they have generated a shared secret key. So the next fifth packet, which is used for authentication, in fifth packet the initiator R2 will send its hash of pre-shared key, means authentication material. Okay, and this packet is encrypted. You cannot see its data. In this flag you will see encryption flag is on. जैसे अगर मैं पहले वाला पैकेट दिखाऊं आपको, फोर्थ पैकेट, ये फोर्थ पैकेट है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये इंक्रिप्शन का फ्लैग ऑफ है, नॉट एनक्रिप्टेड, राइट. और अगर आप ये फिफ्थ पैकेट देखोगे तो यहाँ पे ये इंक्रिप्शन का फ्लैग ऑन है. इट मींस दिस पैकेट इज encrypted. So you cannot see the data which is going inside this packet, but it contains authentication material, the digest value of pre-shared key. Then in the reply you will get the authentication material from R3. Okay, ठीक है, अब दोनों पे प्रीसेड की सेम कॉन्फ़िगर्ड है तो ये ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा. अगर प्रीसेड की डिफरेंट है और अगर आपने कोई भी पॉलिसी मिसमैच कर दी है, ठीक है, तो यहाँ पे नेगोशिएशन फेज 1 में ही स्टक हो जाएगा. ठीक है, आफ्टर दैट इन फेज 2 क्विक मोड विल बी यूज्ड. Okay, phase 1 is completed. After completing the phase 1, ISACamp assay is generated. You can see on R2 do show crypto ISACamp assay. देखो यहाँ पे ये ISACamp assay दिखा रहा है, सिक्योरिटी एसोसिएशन. Okay, and it is giving the information about the tunnel. ये connection ID दिखा रहा है, tunnel status, tunnel source, tunnel destination, right? And this tunnel is created based on IPv4 crypto. Okay, ISACamp assay. आप डिटेल चेक कर सकते हो, डिटेल do show crypto ISACamp assay detail. It will give the information about ISACamp policies, or you can say phase 1, ISACamp phase 1. यहाँ पे देखो कनेक्शन आईडी, टनल सोर्स, टनल डेस्टिनेशन, रिमोट लोकल दोनों डिफाइंड है. फिर उसके बाद VRF हम लोग यूज नहीं कर रहे, वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग. ओके, देन स्टेटस एक्टिव, encryption algorithm, hashing, authentication, diffie element group number, lifetime, all these information they are also available here, right? And capability, अभी देखो कोई capability नहीं दिखा रहा, ये capability है, it is not showing any capability here, right? So we will see what are the different capabilities available, like this IKE configuration mode, NetPA detection, keep alive, net traversal. These are capabilities. IKE extended authentication, this is also capability. Okay, so we will see them later.
For now, the ISACAMP SA is created because phase 1 is successfully negotiated. Now, after negotiating phase 1, phase 2 will be negotiated through this phase 1 tunnel. Okay. जब phase 1 negotiation complete हो जाएगा तो एक management tunnel create हो जाएगी जिसको phase 1 tunnel भी बोलते हैं, right? And through this phase 1 tunnel, your phase 2 will be negotiated. Okay. So in phase 2, you will see this first packet of quick mode and it is encrypted. देखो यहाँ पे ये encrypted है, ठीक है? You cannot see phase 2 information because it is critical. All the phase 2 information is related with data plane security, right? जो भी phase 2 information है वो data plane security से related है, so it cannot be sent in plain text. So data is encrypted. But in this first packet of quick mode, the initiator or R2 is sending its phase 2 policies and the hash of access list. Okay. अब देखो एक्सेस लिस्ट भी ऐसी थोड़ी पूरी एक्सेस लिस्ट भेज देगा वो, है ना? वहां भी हैश ही जाती है सो दैट दे कैन वेरीफाई दे हैव द मिरर इमेज कॉन्फ़िगर्ड ऑन ईच अदर. और उसके बाद देखो यहाँ पे फेज 2 पॉलिसी में मैंने आपको बताया था एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल, वो मैच होगी, ठीक है? दोनों वीपीएन पीएस पे सेम एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर्ड होनी चाहिए. दोनों वीपीएन पीएस पे सेम एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम विद सेम की साइज एंड हैशिंग एल्गोरिथम विद सेम की साइज, दे मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड. ओके, देन योर फेज 2 विल बी नेगोशिएटेड सक्सेसफुली. तो अभी के लिए देखो हमने फेज 2 में सेम इंफॉर्मेशन कॉन्फ़िगर की थी, राइट? तो इन फर्स्ट पैकेट द इनिशिएटर और R2 इज सेंडिंग इट्स, you can say, phase 2 policies and ACL. Then in the second packet R3 is sending, देखो इनका साइज सेम है बिल्कुल, राइट? दोनों पैकेट का साइज सेम है ना, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है. जो इन्फॉर्मेशन R2 दे रहा है अपनी तरफ से वही सेम इन्फॉर्मेशन R3 की तरफ से आ रहा है, राइट? वो भी अपनी इंटरेस्टिंग ट्रैफिक ACL की हैश भेजेगा और जो भी फेज 2 पॉलिसीज थी, IPsec पॉलिसीज या ट्रांसफॉर्म सेट हमने कॉन्फ़िगर किया था उसकी इन्फॉर्मेशन जाएगी, राइट? इन द एंड द इनिशिएटर विल सेंड एन एक्नॉलेजमेंट. देखो इसका पैकेट साइज बहुत छोटा है, 94 बाइट्स का है केवल, है ना? तो बहुत छोटा पैकेट है. So this is just an acknowledgement, nothing more than that. Okay. Initiator will send this acknowledgement to the destination VPN peer so that it can indicate that phase 2 negotiation is completed. Okay. After completing phase 2, VPN peer will create IPsec essay. Do show crypto IPsec essay. ये कमांड होती है IPsec essay चेक करने के लिए, ठीक है? So these commands are very important. Show crypto ISACAMP essay detail, show crypto IPsec essay. Okay. इसको ओपन करो. यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, क्रिप्टो मैप का नेम दिखा रहा है माई मैप. ओके, लोकल एड्रेस मींस ये टनल सोर्स है. देन करंट पीयर, ये टनल डेस्टिनेशन है. दिस इज योर इंटरेस्टिंग ट्रैफिक. ओके, दिस इज योर इंटरेस्टिंग ट्रैफिक ACL, लाइक 10120 से 10130 ट्रैफिक को प्रोटेक्ट करना है ना? फिर उसके बाद ये देखो परमिट फ्लैग है, ओरिजिन इज ACL, मतलब जो भी VPN का इंटरेस्टिंग ट्रैफिक है वो ACL से मैच होगा, ठीक है? देन पैकेट्स एनकैप्सुलेटेड 9, पैकेट्स एनक्रिप्टेड 9, पैकेट्स calculated with digest value 9, then packets decapsulated, packets decrypted, then packets verified by digest value 9. तो ये क्या बता रहा है आपको, कितने पैकेट्स इनक्रिप्ट हुए, कितने एनकैप्सुलेट हुए, राइट? कितने के लिए डाइजेस्ट वैल्यू कैलकुलेट हुई, सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है. If you are using compression, then it will give the information about compression and decompression also. फिर ये लोकल क्रिप्टो एंड पॉइंट टनल सोर्स बता रहा है, डेस्टिनेशन क्रिप्टो एंड पॉइंट, ठीक है? यहाँ पे फिर नीचे आ जाओ. ये देखो दो चीजें, ISACAMP, सॉरी, इनबाउंड ESP essay एंड आउटबाउंड ESP essay. ओके, यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो आप, when IPsec phase 1 is completed, a bi-directional ISACAMP essay is generated. And when IPsec phase 2 is completed, then two unidirectional IPsec assays are generated. Okay. अब देखो ऐसे मैंने क्या बताया था, ऐसे इज कॉल्ड सिक्योरिटी एसोसिएशन. सिक्योरिटी एसोसिएशन ऐसे is an agreement between
VPNPS, which is created after VPN negotiation completes, right? It gives the information about VPN tunnel. Okay, like its status, tunnel source, tunnel destination. Okay, everything. कौन कौन सी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज हो रही है, कौन कौन सी हैशिंग एल्गोरिदम यूज हो रही है, टाइम आउट क्या है, ठीक है। फिर आईपी से कैसे में आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा पैकेट इनक्रिप्ट होके जा रहा है, मतलब कितने पैकेट्स इनक्रिप्ट होके जा रहे हैं, कितने डिक्रिप्ट हो रहे हैं, राइट। कितने के लिए एनकैप्सुलेशन परफॉर्म हो रहा है, ऑल द इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय एसए। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फेज वन में जब फेज वन नेगोशिएशन कंप्लीट होता है तो एक बाई डायरेक्शनल आईपीसेक कैंप ऐसे क्रिएट होता है, राइट। और जब फेज टू कंप्लीट होता है तो दो यूनी डायरेक्शनल आईपीसेक ऐसे क्रिएट होते हैं। तो अब यहाँ चलो आप सीएलआई पे, जो मैंने आपको आईपीसेक कैंप ऐसे दिखाया था, तो इस पे सिर्फ एक आईपीसेक कैंप ऐसे यहाँ पे शो हो रहा है, राइट। फॉर दिस वीपीएन सेशन, फॉर दिस वीपीएन कनेक्शन। तो ये एक बाई डायरेक्शनल आईपीसेक कैंप ऐसे है, दोनों डिवाइसेस पे एक एक आईपीसेक कैंप ऐसे क्रिएट हो गया है। देखो शो क्रिप्टो आईपीसेक कैंप ऐसे डिटेल, यहाँ भी एक आईपीसेक कैंप ऐसे क्रिएट हो गया है ना। तो ये बाई डायरेक्शनल होता है, एक ही ऐसे के थ्रू आइदर कैंप नेगोशिएशन हो जाता है ना। आइदर कैंप की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक्सचेंज हो जाती है। बट टू सिक्योर द डेटा प्लेन वी आर यूजिंग आईपीसेक, एंड हेयर टू आईपीसेक ऐसे आर क्रिएटेड। वन इज कॉल्ड इनबाउंड, मींस ये इनकमिंग पैकेट्स के लिए यूज होगा, एंड दिस इज आउटबाउंड, इट मींस ये आउटगोइंग पैकेट्स के लिए यूज होगा, ठीक है। आइदर कैंप के केस में इनबाउंड एंड आउटबाउंड दोनों के लिए एक ही ऐसे है, बट आईपीसेक के केस में इनबाउंड के लिए एक अलग ऐसे, आइदर कैंप के सॉरी आउटबाउंड के लिए एक अलग ऐसे, राइट। इनबाउंड जो पैकेट्स आएंगे, अब मान के चलो ये R2 है, R2 का टनल स्टेब्लिश हो गया, अब इसके पास जो भी पैकेट्स आएंगे इनबाउंड, अगर वो वीपीएन टनल से आ रहे हैं तो वो इनक्रिप्टेड होंगे, है ना। तो हमें उनको डिक्रिप्ट करना होता है। सो इनबाउंड ईएसपी इज यूज्ड टू डिक्रिप्ट द पैकेट्स, ओके। एंड आउटबाउंड ईएसपी इज यूज्ड फॉर आउटगोइंग पैकेट्स। आउटगोइंग पैकेट्स मतलब जो आपके लैन से ट्रैफिक आ रहा है और उसको आप वीपीएन टनल से सेंड करना चाहते हो, वीपीएन टनल के थ्रू सेंड करना चाहते हो, तो दे आर आउटबाउंड और आउटगोइंग पैकेट्स, राइट। So to secure the outgoing packets, to encrypt the outgoing packets, this outbound ESP is used. Okay, this outbound ESP is used. अब देखो इसमें भी आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ESP ऐसे इनक्रिप्ट करने के लिए यूज हो रहा है, कौन सा डिक्रिप्ट करने के लिए यूज हो रहा है। तो उसके लिए क्या होता है, ये एसपीआई, यहाँ पे देखो ये एसपीआई अलग है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में हो सकते हैं, अगर आप कहीं भी अच्छा खासा इंटरव्यू देने जाओगे तो ये इन डेप्थ लेवल के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। सिर्फ वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन मैटर नहीं करती, आपको ये पता होना चाहिए कि वीपीएन नेगोशिएट कैसे होता है, ठीक है। तो मैंने देखो आइजैक कैंप हेडर में एक एसपीआई बताई थी, वो अलग थी। वो आइजैक कैंप ऐसे को डिफरेंशिएट करने के लिए, यूनिकली डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होती है एक राउटर पे, ओके। और ये एसपीआई अलग है, दिस इज कॉल्ड फेज टू एसपीआई, सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स। फेज टू एसपीआई, वो फेज वन एसपीआई थी, ठीक है। आइजैक कैंप कुकी बोलते हैं उसको, इनिशिएटर कुकी, रेस्पॉन्डर कुकी, ठीक है। तो वो फेज वन एसपीआई है, एंड दिस इज फेज टू एसपीआई। इन फेज टू दिस एसपीआई इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ एसपीडी। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले क्या है, ऐसे, राइट। ऐसे इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसएडी एंड एसपीडी। एसएडी इज कॉल्ड सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटाबेस, एसपीडी इज कॉल्ड सिक्योरिटी पॉलिसी डेटाबेस, ओके। अब यहाँ सीएलआई पे आ जाओ। अगर आपको सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटाबेस देखना है, सिक्योरिटी पॉलिसी डेटाबेस देखना है, तो आप क्या देखोगे, ऐसे, राइट। और तो कुछ है नहीं है, ऐसे देखोगे। तो ये आपका सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटाबेस है कि रिमोट लोकल एंड पॉइंट क्या है, रिमोट एंड पॉइंट क्या है, कनेक्शन आईडी क्या है, टाइम आउट कितना है। ये क्या हो गया, ये आपको एक कनेक्शन की एसोसिएशन की इंफॉर्मेशन दे रहा है, राइट। तो दिस इज एसएडी, सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटाबेस। ये आपके वीपीएन एसोसिएशन की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कौन से दो वीपीएन पेयर है, उनकी क्या इंफॉर्मेशन है, कब टाइम आउट होगा, है ना। ये एसोसिएशन की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये एसएडी हो गया, ठीक। और ये एसपीडी है, ये एक्टिव वाला भी किसमें आएगा, एसएडी में, ये एसपीडी है। यहाँ पे ये सिक्योरिटी पॉलिसी डेटाबेस, सिक्योरिटी पॉलिसी की इंफॉर्मेशन दे रहा है, राइट। इसी तरह से फेज टू में दिखाता है। देखो फेज टू में अगर आप देखोगे, ये टनल सोर्स, टनल डेस्टिनेशन, राइट, ये सब इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये एसएडी है, ओके। अब देखो इसमें अलग अलग नहीं कर सकते आप, एसएडी क्या होगा, एसपीडी क्या होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है उसी को ऐसे बोलते हैं, ओके। तो ऐसे इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसएडी एंड एसपीडी। एसपीडी इज सिक्योरिटी पॉलिसी डेटाबेस। देखो यहाँ भी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, हैशिंग एल्गोरिदम डिफाइंड है, उनका टाइम आउट डिफाइंड है, सारी इंफॉर्मेशन है। ये देखो टाइम आउट लिखा हुआ है, ये
हाँ ये है टाइम आउट, ये वाला। ओके, ये लाइफ टाइम है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये इनबाउंड ईएसपी ऐसे है, ये आउटबाउंड ईएसपी ऐसे है। तो एसएडी और एसपीडी क्या होता है? सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटाबेस। एसपीडी होता है सिक्योरिटी पॉलिसी डेटाबेस। अब एसपीआई, फेज टू एसपीआई बता रहा था मैं, है ना? फेज टू एसपीआई, एसपीआई इज कॉल्ड सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स। इट इज द हैश ऑफ एसपीडी, सिक्योरिटी पॉलिसी डेटाबेस। ओके, it is the hash of SPD, Security Policy Database. Now you can go to the CLI. You can see this is inbound ESPSA on R2 and this is outbound ESPSA on R2. तो अब R3 पे आ जाओ, यहाँ भी IPsec ऐसे होगा, राइट? सो क्रिप्टो IPsec ऐसे। तो here you can see inbound ESPSA and outbound ESPSA. अब जब R2 R3 के पास कोई पैकेट सेंड करेगा, right? When R2 will send any packet through VPN tunnel to R3, then R2 will encrypt it. R2 will encrypt it with its outbound ESPSA, right? R2 will encrypt this packet with its outbound ESPSA. तो इसकी SPI देख लो 3981 है लास्ट में, ठीक है? अब ये इनक्रिप्टेड पैकेट जो R2 ने भेजा है वो R3 पे रिसीव होगा, राइट? तो R3 विल डिक्रिप्ट दिस इनबाउंड पैकेट यूजिंग इट्स इनबाउंड ESPSA, right? And you can see its SPI 3981, same as outbound ESPSA SPI of R2, है कि नहीं? तो जो पैकेट R2 अपने आउटबाउंड ESPSA से एनक्रिप्ट करके भेजेगा, R3 उसको अपने इनबाउंड ESPSA से डिक्रिप्ट कर लेगा। और जो पैकेट R3 अपने आउटबाउंड ESPSA से एनक्रिप्ट करके भेजेगा 4701, R2 उसको अपने इनबाउंड ESPSA से डिक्रिप्ट कर लेगा 4701। समझ में आ रहा है? बताओ। And your packets are encrypted, you can ping continuously। यहाँ रिपीट पे 100 कर दो, ठीक है? 1000 कर दो। तो देखो सारे पैकेट्स ये जा रहे हैं, ये सब इनक्रिप्ट होके जा रहे हैं, ठीक है? अब आप वेरीफाई कर लो लूसो क्रिप्टो आईपी से कैसे। तो देखो यहाँ कितने हो गए, 1109 पैकेट हो गए। पहले से 9 थे, फिर 100 भेजे, फिर 1000 भेजे, तो 1109 हो गए पूरे। ठीक है, यहाँ पे एक कमांड और होती है, डूसो क्रिप्टो इंजन कनेक्शन एक्टिव। This command will also show you directly how many packets are encrypted, how many packets are decrypted, and a last sequence number, right? तो ये देखो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये शॉर्ट में अगर आप देखना चाहते हो, जल्दी जल्दी में देखना चाहते हो कि कौन से पैकेट इनक्रिप्ट हुए, कौन से डिक्रिप्ट हुए, तो आप इस कमांड का भी यूज कर सकते हो, ठीक है? अदरवाइज अगर आप पूरा ऐसे एनालाइज करना चाहते हो तो हमेशा ऐसे ओपन करो, ठीक है? डू शो क्रिप्टो आईपी कैसे, और आई द कैम्प के लिए क्या हो जाएगा, आई द कैम्प ऐसे, डू शो क्रिप्टो आई द कैम्प ऐसे। और डिटेल चेक करनी है ऐसे डिटेल, ठीक है? दीज कमांड्स विल बी हेल्पफुल। पॉलिसी देखनी है, पॉलिसी देख लो, ये पॉलिसी दिखा देगा जो पॉलिसी आपने कॉन्फ़िगर कर रखी है। डू शो क्रिप्टो एज ए कैम्प पॉलिसी, प्रायोरिटी नंबर 10, राइट? क्लियर? एज ए कैम्प पीयर्स देख सकते हो, ये बता देगा कौन सा वीपीएन पीयर है ना? लोकल, रिमोट। ओके, तो यू कैन वेरीफाई ऑल दिस इंफॉर्मेशन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? फिर हम लोग और भी चीजें अभी डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ एक प्री शेयर्ड की बेस्ड क्लासिक साइड टू साइड वीपीएन था, राइट? इन नेक्स्ट क्लास आई विल आल्सो शो यू सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ओके? At that time we will see many other things also.